Hello friends, welcome to my class and this is the last class for the chapter structural organization in animals, and today we will go through the topic morphology and anatomy of frog. Morphology of frog. The first thing, frog is poikilothermic organism, means cold blooded animal, means its body temperature gets fluctuated according to the atmospheric temperature. It is not able to keep its body temperature constant. That is called as poikilothermic organism. It shows camouflage. Camouflage means it can change its skin color according to the background color. Dry skin is smooth and slippery due to presence of mucus. The frog do not drink water but it absorbs through its skin. इसको अपने मुंह से पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्किन ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. Body is divided into head and trunk. The neck and tail is absent. Nostril is present above mouth. Eyes are covered with nictitating membrane that helps the eyes of frog when the frog is in water. Ear is represented by tympanic membrane. इसको ध्यान देंगे that ear is represented by tympanic membrane present to the side of the eyes. Hind limbs have 5 digits, whereas fore limbs have 4 digits. हिंड लिम्स कहने का मतलब है उनके पीछे के पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं, जबकि आगे के पैरों में फोर लिम्स मतलब आगे के पैरों में केवल 4-4 उंगलियां होती हैं. फीट्स आर वेब्ड. उंगलियों के बीच में वेब होता है जिसको वेब्ड फीट बोलते हैं और उनको वो स्विम करने में हेल्प करता है. मेल इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक्स एंड कॉपुलेटरी पैड on the first digit of forelimb. Now anatomy of frog. Skin of frog is without scales. It has 2 layers, outer epidermis and inner dermis. Dermis contains mucous gland that secretes mucus. They show true coelomic cavity in the body. They have pericardial cavity around heart and peritoneal cavity around visceral organs. The skeleton system has 2 regions. स्केलेटन सिस्टम 2 भाग में बांटा गया है. पहला है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है पेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स स्कल एंड वर्टिबल कॉलम, whereas the pendicular skeleton consists of limb bones and the girdles. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज जस्ट नियर अबाउट अस. जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसा ही फ्रॉग का भी लगभग होता है. फर्स्ट इज फ्रॉग इज कार्निवोरस, सो इट हैज़ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल. फ्रॉग कार्निवोरस एनिमल है, उसकी डाइट कार्निवोरस वाली होती है, इसलिए उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ा सा छोटा होता है. माउथ इज टर्मिनल एंड वाइड. माउथ ओपन्स टू एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स. Esophagus opens to stomach and stomach continues to intestine, rectum and finally to cloaca. Liver secretes bile juice that is stored in gallbladder. Pancreas secretes pancreatic juice with lots of digestive enzyme. Digestion takes place in the stomach by the action of HCl and gastric juice. The partially digested food is passed to the intestine, where bile juice and pancreatic juice shows its effect on the food for its final digestion. तो जो partially digested food है with the help of HCl and gastric juice in the stomach, जो कि केवल partially digest होता है, वो फिर इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस के हेल्प से फाइनल डाइजेशन फूड का हो पाता है. नाउ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई. तो इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं और माइक्रोविलाई होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं.
नाउ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. फ्रॉग शोज टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. दो तरह से रेस्पायर कर सकता है. पहला है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. तो फ्रॉग जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. When frogs are in water, at that time they shows cutaneous respiration, in which the dissolved water in oxygen in water is exchanged to the skin by diffusion. दूसरा है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग शोज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो एस्टिवेशन हो, एस्टिवेशन मीन्स होता है समर स्लीप और हाइबरनेशन में तो होता है विंटर स्लीप. तो इन दोनों समय भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है फ्रॉग. तो तीन कंडीशंस हो गए, एक तो जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तब, और एक एस्टिवेशन का टाइम और एक हाइबरनेशन का टाइम फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज शोन बाय द फ्रॉग इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन. When the frogs are on land, their buccal cavity, skin and lungs act as respiratory organ. Their lungs are paired of elongated pink-colored sac-like structures. Air enters to nostril and then to buccal cavity and then to lungs. और फिर लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है. तो लंग्स जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और जब फ्रॉग लैंड पे होता है तब वो शो करता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. Now circulatory system in frog. Frog shows closed type of circulatory system. Closed type of circulatory system कहने का मतलब ये है कि जो blood है that flows through the arteries and veins in the body. Circulatory system of frog includes heart, blood and blood vessels. Heart होता है, blood होता है और blood vessels होते हैं. It also have lymphatic system that consists of lymph vessels and lymph nodes. The heart of frog is three-chambered and consists of two atrium and one ventricle. Heart फ्रॉग के हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम होता है और वन वेंट्रिकल होता है. द हार्ट इज कवर्ड विथ पेरिकार्डियम. Right atrium has attached triangular structure called sinus venous that receives blood from major vein called vena cava. The ventricle opens into coronus arteries on ventral side of heart. The blood is pumped to all parts of the body through arteries. The veins collect blood from different parts of the body to the heart and from the venous system. A special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of the body are present in frog. The first is called hepatic portal system and second is called renal portal system. The blood is composed of plasma and cell. The blood cells are RBC, WBC and platelets. RBC is nucleated and contain hemoglobin. Lymph flows in lymphatic system of the body. Now excretory system of frog. Frog shows well developed excretory system. Excretory system of frog consists of pair of kidneys, ureter, cloaca and urinary bladder. Each kidney is composed of several structural and functional units called nephrons or unified tubules. In males, two ureters emerges from kidney and work as urinogenitical duct and opens into cloaca. Urinogenitical duct का means होता है a duct which work as two duct means for carrying urine also and for carrying gametes also. तो मेल्स में ये जो यूरेटर है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है और क्लोका में ओपन होता है. इन फीमेल्स यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोका. थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर ऑल्सो ओपन्स इन क्लोका. Frog excrete out urea, so it is called as ureotelic animal. Now control and coordination in frog.
Control and coordination is highly developed. It includes both neural system and endocrine glands. तो फ्रॉग में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट हैं, एक तो न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम मीन्स द नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स द ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. The prominent endocrine glands which are found in the frog are pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, etc. And these glands control and coordinate body through the chemical secretion called hormones. न्यूरल सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है. दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स होता है. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन. तो फ्रॉग के ब्रेन से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज होते हैं. And the brain is enclosed in box called cranium box. The brain is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain include olfactory lobe, paired cerebral hemisphere and unpaired encephalon. And midbrain consists of optic lobe. Hindbrain consists of cerebellum and medulla oblongata. Medulla oblongata passes out through foramen magnum and continues into spinal cord, which is enclosed by vertebral column. Frog has also different types of cells, organs of touch, taste, smell, vision and hearing. External ear of frog is absent, and that is represented by tympanum. That is also organ for hearing and as well as for balancing equilibrium of the body. Now reproductive system in the frog. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर. नाउ उसको देखते हैं क्या क्या है उसके बॉडी में है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ovoid testes. Testes are attached to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called mesochorium. Vasa effrontia, 10 to 12 in numbers, that arises from testes. They enter into the kidney on their side and open to Bridger's canal. Finally, Bridger's canal communicates with urogenitical duct that comes out of the kidney and opens into cloaca. And cloaca passes out the facial matter, urine and as well as the sperms to the exterior of the body. Now female reproductive system, you can see the figure on the screen. Now what is it? It includes a pair of ovaries. The ovaries are situated near the kidneys, but there is no functional connection with kidneys. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि फ्रॉग में जो टेस्टिस होता है उसका कनेक्शन होता है किडनीज के साथ, मेसोकोरियम के साथ, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी दैट ओपन्स टू क्लोका सेपरेटली. मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ova at a time. Fertilization is external and takes place in water. Development includes a larval stage called tadpole. Tadpole undergoes a metamorphosis for becoming adult. Frogs are beneficial to the farmers as they eat lots of the insects which harms the development and cultivation of the crop. So that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.